war between parliament or state legislature and the courts. Non-interference with the view of the majority in parliament with regard to what is reasonable and interference with what is prohibited by the constitution may perhaps be a harmonious path for a peaceful transition for a glorious future. In Lahore Development Authority versus Mrs. Imran Tewana 2015 SCMR 1739, this court, while stating the rules which must be applied to declare laws unconstitutional, has held that if a case can be decided on other or narrow grounds, the court will abstain by the constitution may perhaps be a harmonious path for a peaceful transition for in Lahore Development Authority versus apparently divergent views, you have to reconcile all of them. Sir, I try to read everything which your lordships write, whether reported or unreported. Sir, now I'll come back to this, but my reading of your lordship's order is that if for the purposes of legislative competence, appeal is a part of procedural law. If that is so, then Parliament can also confer appeal. Not all appeals, but intra-quota. Intra-quota. 191 read with 58, and the court can also do that. Court can also. Yes, the court can also do that. Why is appeal not a restriction? I think an appeal against orders passed under 184(3) are not liberating, are not restrictive, they would be liberating, because it is a problem that there is no appeal against such tremendous power exercise. This Order 5 Rule 2 that you read, even though we will certainly consider it as an administrative appeal, but practically it is an appeal provided it determines the right of the parties, and the rules are providing for that appeal. Yes. So this is one way I can that legislative competence. I've recorded your contention. Correct me if my understanding is correct. Intra-court appeal liberating, and both Supreme Court and Parliament can provide for them. Yes. Okay. Yes. And why They are not always restrictive, my lord. If I may follow what my learned colleague has said with regard to Order 5, why didn't I can't hear you. I can't hear you. I mean, I can't hear you. I'm so sorry. What my learned colleague said regarding Order 5, it's why do the rules use the word reconsider? Why not simply call it an appeal? Because read it, आप उसको पूरा पढ़िए ना, आप उसको kindly पढ़िए. There's a reason why it's called reconsider. The power of the court in relation to the following matters may be exercised by a single judge sitting in chambers, but subject to reconsideration at the instance of an aggrieved party by a bench of not less than 3 judges, which may include the judge who dealt with the matter. Yes. It cannot be an appeal. This is not an appeal because it cannot be an appeal. So this is a review? This is not a review. This is a reconsideration. Sir, it is like a review then. No, it's not. A review, practice and procedure में review का power confer कर दिया. ये देखिए ना जी. अगर deliberately in an appeal, can't a judge who passed an order sit? Sir, that is not the notion of. For instance, I'll just give you another example. A bench, their divergent views, right? And the matter is referred to the Chief Justice to send for opinion of the third judge. Alternatively, what could happen alternatively is because one set of arguments were, the third judge hasn't heard the arguments as well, or that particular question as articulated was not put to them. Yes. So that can the Chief Justice then say, can you all three sit together and decide it, since now the possibility of a hung court will not arise. It can still go in 3 different ways. So what is that called? I mean, that option is available to the Chief Justice. There's no, I'm adding another member on the bench and hear this matter again, or whatever you want to call it. And if I could add to that, if you look at Section 5, you see, I mean, this is a traditional notion, but if you look at Section 5 of the law, the one under challenge, it says that the appeal will go to a larger bench. Now, I just, want to understand whether a larger bench could have this earlier set of judges along with other judges, or a new set of judges as a larger bench. So, I mean, where is this restriction inherent? I mean, traditionally, yes, appeal would be heard by
But could there not be a hybrid system where there could be an appeal to a larger bench in this particular situation, which is the apex court dealing with these matters, and that sort of resolves the problem of 4 and 5 also? Why can't one or two other judges be added to it? I mean, is there a problem somewhere, or does it? My lord, is there for instance, I'll just further add to it. There have been instances where review matters have come up before larger benches, even during the subsistence of the judges who had earlier passed the order, and they are reported cases. So what is that? Is it a classical review will be heard by the same judges? That's simple enough. Now, this matter has been decided by 2 or 5 or whatever, and one judge has been removed, 3 have been added. So that judge here himself being bench is reviewing the matter, and the others are exercising powers of appeal. Surely they can't be exercising powers of review. I don't know. So these, as His Lordship, Mansoor Shah has pointed out, it may be a different category of animal. Let me just build on what both your lordships have said. Let us forget about the distinction between appeal and review. Reconsideration. That is only for the reconsideration, Mr. Faisal. You kindly read Rule 2, which says the reconsideration by the bench of 3 members. If you go through Rule 4, that is an application for reconsideration under Rule 2, and appeal under Rule 3. Appeal is an appeal live from the registrar in all cases to the judge in chambers. So let us look at this There word are reconsideration. two parts of that. The reconsideration, that would not be considered an appeal, but the appeal is provided separately. That is against against the order of the registrar in chamber. That is And against suppose if we registrar. were to consider Section 5 and is why consider it the as a word- reconsideration, That is why the word reconsideration has been used, in which the judge who passed the order may be included in that bench. Yes. So it's not a part of appeal, it is not just like an appeal. But let us See, and if we were to just say that Section 5 is a reconsideration, and Sir, let's may- not in the word appeal, let's could it just not focus then on pass this the word muster? reconsideration. What is happening? Sir, मैं एक बात that is why मैं it एक is बात not कर- an appeal, reconsideration. लेकिन ये आप इसलिए देखिए, बैठ ये सकते जो रिव्यू एक्ट जो पास हुआ था इस एक्ट के बाद, उसमें लिखा गया था रिव्यू शैल बी हर्ड लाइक जी एन मैं उस पे भी आ रहा था and उसके अंदर speaking entirely for myself, And it was struck I down have on given that. a concurring judgment in which I have pointed out the serious jurisprudential issues that would arise where half the bench is essentially hearing it as a, because they've heard it before as review, and half the bench is hearing it for the first time, therefore an appeal. You can't mix and match like that. Sir, let's forget about this distinction between appeal and Constitution की वो तो Constitution की distinction ही खत्म हो जाती है. let us concentrate about the word reconsideration. Single judge ने order किया है, उसको reconsider कर रहे हैं 3 judges. But that is on the administrative side, it's not Sir, a judicial उसमें order. applications decide हो रही हैं. अब reconsideration has become, which is in the nature But of a review. all those matters in Order 5, even though, well, it passes for whatever we may call it as an administrative, but there's substantive rights being decided. And they have been made a part of a law which is limited to practice and procedure. But So the Parliament word is- reconsideration. Is it Parliament on has called it an administrative appeal. side, Mr. Faisal, or the judicial side? Ji sir, Is this on the administrative side or the judicial side? this is on the administrative side, sir. Then why the word use aggrieved party by a bench of not less than 3 members? The bench is constituted Yeah, I don't know if the this judicial is. side or the administrative side. Taking that point further, I mean, whether at all these straight jackets about this administrative, moving into judicial, The moving point into is- administrative. Probably the bard said it best. A rose by name would smell just as sweet. I would So say- whatever you call it, I would say reconsideration and order of your brother judge on judicial applications, if that can be considered as a part of procedure and practice, my lord, then just building on what Justice Munib has said in his opinion, why not appease as a part of procedural law? So, but that's my alternative. But let me come to my main argument, which is legislative competence as far as appeals are concerned. I rely on entry 55. And like Hasan Azhar Saab's judgment, where he relies on 175.2, the judgment authored by her ladyship Ayesha Malik Sahiba has also relied on 175.2, read with entry 55 in the CCP judgment, which conferred an appeal to the Supreme Court. So, See, as pointed out yesterday,
there is a difference between bringing an appeal to the Supreme Court as opposed to creating an appeal against an order of the Supreme Court. So when you are relying on examples where the appeal is coming to the Supreme Court, it's different. The whole the way of looking at the law and interpreting the law will be different. The question here is not about can this appeal come to the Supreme Court. It's about whether this appeal under 143 amounts to a creation of jurisdiction or whether it is the बंदे ने की क्या थी कि किन्ने को पैसे टकरन दे पाशी वापस आ रहा है क्या कहेंगे आज जलसा है आपके यहाँ जूते सारे तैयार रखें 1000 रुपया लेके जाते थे ना जब तो पूरे घर का राशन आ जाता था 15 दिन का आप 1000 रुपया लेके जाते सिर्फ एक चीज आती है आप इनका इस्तेमाल करें जिन्होंने हमें खूब खाते डाला हुआ पाकिस्तानियों के छितर पढ़ रहे हैं बिल्कुल अच्छे पढ़ रहे हैं ये सही लोगों का इंतखाब करते ही नहीं इन्होंने अपने केस खत्म करवाने थे करवा लिए कि जी कौम की बेटी है कौम की बेटी है आपको आफिया सदीकी नहीं नजर आ रही वो नहीं है कौम की बेटी पहले उसको देखे गैरत कहाँ मरी हुई आप लोगों 20 साल हो गए उसे जेल में सड़ते हुए गैरों की जेल में किसी ने कुछ किया उसके लिए अस्सलाम वालेकुम व्यूअर CurrentNN के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी उससे पहले मुस्लिम नून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहाँ पे जलसे कर रही है कि रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है कहीं पे कानून मीटिंग का एहतमाम किया जा रहा है आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों लाहौर के मुकाम शादरा पे मुस्लिम नून सर this is 2021 CLD 214 at para 62-64. But let me come back. Para 62 to 64. But let me come to there are two parts to the objection which have been raised. The first part is where does legislative competence come from? Which end do you rely on? The second part is the problem which your ladyship has raised, which is what is the constitutional procedure to be adopted to confer this appeal, whether it's through an ordinary statute or through a constitutional amendment. Let me deal with both objections separately. Let me first come to the objection of legislative entry and legislative competence. If I may draw your lordship and ladyship's attention to entry 50, kindly, it's quite a complicated entry. मैं अगर इसको जरा ब्रेक डाउन करके पढ़ लूं अगर आप पढ़ते हुए ये एंट्री 55 को एक दफा दोबारा से पढ़ें वही मैं पढ़ रहा हूं सर आप उसमें you miss out on the jurisdiction powers of all courts. What do you mean? What is excluded then? अगर हम आपकी बात माने तो फिर तो आप क्योंकि उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है तो आप उसकी हर चीज को इनलार्ज कर सकते हैं वो आप और दूसरा इसमें इसी सवाल में अगर पढ़ते हुए टू सच ऑथराइज जी इसके ये ऊपर के साथ पढ़ना है नीचे के साथ पढ़ना है कहाँ पढ़ना है लेट अस रीड दिस एंट्री jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court. Now let me stop here. Your lordship, ladyship may just keep your eye on the word jurisdiction and power because it will occur again, but in a different form. With respect to any of the matters in this list. Now, this of course is not relevant only to the extent that enlargement of jurisdiction and supplementary powers have to be understood by the first part. So it's a different thing which is being talked about in the second part when one is talking about the Supreme. Now, or under se padhe na, or under. जी. And to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. So this is the first condition. That if you want to legislate under this entry, then you need a conferment by or under the Constitution. So, is it your argument that this by or under would bring in item 58? No, this is okay. But there are two restrictions on this entry. It is not an open-ended entry. So you're saying that this, to such extent as expressly authorized, is to be read on the first part of the entry relating to the high courts and other courts, or to the Supreme Court? No, second. Or both? Second part. Second part. Yes. Okay. To the Supreme Court part. Okay. To such extent as is expressly authorized by or under the Constitution. Now you need to seek this conferment of power from other provisions of the Constitution, either expressed by or necessary implication.
But Entry number that power 55 में मिस्टर फैसल ये जो 2 लाइनें हैं ना with respect to of the matters in the list ये तो हो गया बाकी कोर्ट्स के लिए ये तो कोर्ट्स के लिए हो गया, ये हमारे लिए से शुरू हुआ वो फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का तस्करा जी 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 अब सुप्रीम कोर्ट हाँ चल इसके मानी पे एक्सटेंट के और इसमें जो एक्सप्रेस ऑथराइजेशन words used are expressly authorized by the Constitution. Where do you get the express authorization from? Yes, Who explained but that? it is by or under that critical. No. You see, express means express. No. It can't be implied. By When it says to be express, I'll you can't explain. read Let me implied just into it. explain the other 2 restrictions and then I'll come back to this. I am really enjoying your physical motions. It makes me a little dizzy, but I'm really Sir, I'm refreshing sorry, also. sir. I'm sorry. No, it's okay. I mean, it's just on the lighter side. If we stop him, you won't be able to argue. No. I just find very refreshing it. Sub Article 2 is the only exercise I get, sir. Sir, the first restriction is the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court. Now, your Lordship will see the difference between the first part and the second part. You can't legislate in relation to all matters in any way when it comes to the Supreme Court. It must be, there is a restriction involved. You have to justify the law as enlarging the jurisdiction of the Supreme Court. but expressly But authorized expressly, yes. वो बताएं वो कहाँ है उसका क्या मानी मैं है? एक मिनट second part पढ़ लूं जी. And the conferring thereon supplementary powers. So it's not that you can legislate on any powers of relating to the Supreme Court. It should be a law that confers power on the Supreme Court, supplementary. In addition to what is already mentioned. जी? In addition to लेकिन वो मायूस कौन रहा उसके बाद फिर This is a way to protect the jurisdiction ये of the देखें कि powers of the वो- Supreme Court. That if the दोनों है ना एक तो enlargement सिर्फ अपना आप क्लियर करके निकल गए। अच्छा मुस्लिम लीग नून का जलसा है यहाँ पे लोगों को निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म सूबा बलूचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के निफाज की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुनक्किद होने वाले बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी के हम आवाम की राय जानेंगे कि आवाम जनरल इलेक्शन में लाहौर के हल्का N 133 से हम आवाम की राय जानेंगे कि आवाम जनरल इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे। अगर बात की जाए इस हल्के के 2018 के जनरल इलेक्शंस की तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज मलिक ने मैदान मारा था और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इजाज चौधरी हार गए थे। इस दफा जनरल इलेक्शन 2023 या 24 में अगर इंतखाबात होते हैं तो आवाम अपना वोट किस पार्टी को कास्ट करेंगे? तहरीक इंसाफ की जानब से इजाज चौधरी या उनका बेटा उम्मीदवार होगा, मुस्लिम लीग नून से शाह परवेज मलिक उम्मीदवार होंगी। तो आइए जानते हैं आवाम की राय। इस हल्के की आवाम अपना वोट किसे देकर नेशनल असेंबली में पहुंचाएंगे? वोट किसको डाल रहे हैं? सर जी ये समझदार के लिए इशारा काफी है, क्यों मरवाना? इस बार सर वोट किसको डाल रहे हैं? वोट का मौका मिलेगा। पुराने तो सब देख चुके हैं, बिलखसूस नून लीग बेहद बेहुदा पार्टी है, वो बिल्कुल इस काबिल नहीं। पीटीआई जिंदाबाद। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, लेकिन वो वाकई अच्छा इंसान, उसकी कोई जायदादें नहीं है। जितन का ऐलान हुआ ना कि आ रहा है उतन का बत्ती कितनी वधी है, कल 5 रुपए फिर वध गई है। ये मथे लगांगे तो अं वोट पावांगे, उन्होंने पहले ही मार देना। साडियां 7 पुश्तां भी लगियां रहियां ना, ये कर्जा नहीं ला सकते। जो सूड़ा बूरा इन्हें खुआ दिता, दुनिया नूं मार दिता, अल्लाह नो वधी है। रेत खुआ दी इन्होंने जी की मुहत आटा दे रहा। कल रिया बिल तो आ रहा है 23,000 ते उत्थे की अहीं अंदर पै। सर इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान को डालेगा भाई इंशाल्लाह। 10 साल से जाया कर रहे हैं तो अब भी जाया ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? इमरान खान। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? पीटीआई को। इस दफा नवाज शरीफ को। इस बार सर वोट किसको डाल रहे हैं? वोट का मौका मिलेगा इंशाल्लाह 4-5 दिनों में इलेक्शन होंगे तो मौका मिलेगा। पहले ये तो कंफर्म हो जाए, फिर वोट भी डाल लेंगे। अब कोई पार्टी तो कोई डिसाइड हो जाए, कुछ सीधी हो तो जाए। वही तो अपनी जगह पे नहीं खड़ा, वोट क्या है, कोई तरतीब लगेगी तो वोट डालेंगे हम। बाकी देखें, अभी तो टाइम पड़ा हुआ काफ़ी। ये सवाल हमने टाइम से पहले कर लिया आपने। वोट लास्ट है पीटीआई को। इंशाल्लाह देखो पीटीआई होगी इंशाल्लाह, आई तो, क्योंकि पंगा बहुत बड़ा लिया हुआ है, मुश्किल ही लग रहा है। मैं अब आएगी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आए तो पीटीआई इंशाल्लाह। वोट किसे नहीं आप पाना, क्या वजह है इसके पीछे? ये महंगाई कितनी है,
ये दे तो नहीं, खाने को तो नहीं देते, हम वोट इनको डालें? अपनी मेहनत करते हैं, कैसे इनको वोट डालें? हाँ, महंगाई देखो कितनी है, इनको चाहिए कि सब कुछ सस्ता करें फिर वोट डालें। दोपहर की जी रोटी है शाम को खाता है, सुबह की खाधी हुई शाम को रोटी खाता है, तो माड़े बंदे ने की करना? महंगाई की वजह तो कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ खा पी सकते हैं, ना कोई अपनी चीज़ कोई अच्छी लै सकते हैं अपनी ज़रूरत की। तो किसी ने भी वैसे वोट नहीं पाने चाहिए, क्योंकि जो हक च किसी गरीब के हक च कोई करता ही नहीं इंसाफ। हर बंदा अपनी सोच रखता, अपने लिए सोचता, किसी लिए नहीं सोचता। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? किसी को भी नहीं। क्या वजह है इसके पीछे? सब चोर हैं। सर इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ। चाचा जी की हाल है? ठीक ठाक जी। इस बार वोट किन्नू पा रहे थे? देखो जी वोट नॉन लीग नॉन लीग का पक्का है, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस बार वोट किसको डाल रहे हो? इमरान खान। सर इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? जी सर पिछली दफ़ा दिया था। पिछली बार किसको दिया था? खान साहब को। वोट किसको डाल रहे हैं? वोट यार पिछली बार जिसको डाला इस बार भी डाल देंगे। पिछली बार किसको डाला था? वोट एक माना था, वो सीक्रेट होता है, वो नहीं बताते किसी को। और आपको पता है वोट का आजकल बताएं तो फिर क्या होता है। वोट एक अमानत है, उसको सीक्रेट रखना चाहिए। जैसे बैलेट बॉक्स को ऐसे टर्न करके अंदर डाल देते ना, किसी को दिखाते भी नहीं, वो ऐसे पर्ची को बाहर दिखाए ना, वो बुला लेते हैं वापस आ जाओ, तूने क्यों दिखाया ऐसे। मतलब वोट एक अमानत है, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, जिसका आपका दिल करता है उसे आप वोट दो। मतलब समझदार बंदा समझ जाएगा खुद ही। सर जी ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, क्यों मरवाना है? सर अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस बार वोट ज़ाया करने का इरादा है? नहीं ज़ाया नहीं करेंगे, डालेंगे इंशाल्लाह। तो कोई क्या मूड है इस बार, किसको डालेंगे? सर कोई मुनासिब सी पार्टी लगेगी तो डालेंगे इंशाल्लाह। तो आपके नज़दीक कौन सी मुनासिब पार्टी है? अभी तो कोई भी नहीं है सर, अभी तो सारा रौला ही चल रहा है। इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? किसी को नहीं डालना जनाब, बहुत आवाज़ आ रहे हैं। क्या वजह है कि आप वोट ही नहीं डाल रहे इस बार? फायदा ही कोई नहीं, हमारा ना डालो ना डालो एक ही बात है। वो ना उन्हीं ने जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनकी हवा चल रही है। ऐसे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। जिनकी हवा चल रही है भाई, वो उनको ही आना, उन्होंने नहीं आना। हमें भी पता है, आपको भी पता है, मीडिया वालों को ज़्यादा पता होता है किधर की हवा चल रही है। अगले कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। क्या समझे, वोट डालने का कोई फ़ायदा? लास्ट टाइम वोट किसको डाला था? लास्ट टाइम नून लीग को। इस दफ़ा अभी तो सोचा नहीं है। मतलब थोड़ी थोड़ी सोच है नून लीग की। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि हवा उधर की है ना, ये चढ़ते सूरज को सलाम है। वोट तो सर फिलहाल कभी नहीं सोचा, अभी किसी को नहीं डाला। तो इमरान खान अंदर है, किसको डालेंगे? तो इंशाल्लाह वो तो बाहर आ जाएगा। हाँ जी ज़रूर आएगा। तो किसको वोट डालेंगे? वोट अभी फिलहाल तो इमरान खान का ही है। सर इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? सर अभी तक कोई इरादा नहीं किया, क्योंकि कोई entry of the legislative. 191 comes into field and with all due respect, your argument is circular. You see, because you start with entry 55, you go to 175-2, and then you bounce back into 175. Entry 55. It's a ping pong day for you. Yes. The law. Oh, we are back to ping pong. It's a ping pong day for If I may explain, because the law over there has to surely mean validly enacted law. Yes. And for law to be validly enacted, one cannot look at Article 175(2). One has to look. वो कैसे लाया क्या है? फाइन कोई चर्चा नहीं है, मन लुट जा रहे बाहरी, कौन सा चर्च है? आवाम दे फिक्र होता था ना, तो वो बाहर ही नहीं जाते, उनको आवाम दे फिक्र ही नहीं है। फिक्र है अपनी कैसे? फाइन जिसको मुल्क का फिक्र होते है, उसका जिस टाइम आते हैं ना मुश्किल आते, जो भी अपने मुल्क में होते हैं। my lord, let me just read तो आज लोगों को कैसे लाया गया? judgments which explains my पता है इस टाइम में हमको कुछ मालूम, फिर भी कैसे लाया गया? I'll just read यार this. सारे जितने जा रहे हैं, कुछ लोग कोई कहते हैं 1500, कोई कहते हैं 500, कोई कहते हैं 2000, 500 इतना कम? फाइन से हालात जो है ना, अगर किसी को 100 रुपए पे मिलते वो भी जा सकते यार, इतना तो किराया, इससे ज्यादा तो किराया। तो आज लोगों को कैसे लाया गया? लोगों को कैसे लाया? तो आज लोगों को कैसे लाया गया? Jurisdiction can even be conferred on this court. लोगों को कैसे लाया गया? Relates to all the courts. Now, इसका सिंपल मतलब ये है कि जब तक आपको jurisdiction नहीं है, जब तक आप सुन नहीं सकते। The only restriction
is in entry. आपको पता है इस टाइम में आपको कुछ मालूम फिर भी कैसे लाया? Yes. No. यार सारे कितने जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं 1500, कोई कहते हैं 500, कोई कहते हैं 2000, 500 इतना कम? पानी से हालात जो है ना, अगर किसी को 100 रुपए पे मिलते वो भी जा सकते हैं। यार इतना तो किराया, इससे ज्यादा तो किराया लग गया। नहीं यार, इंक्लूडिंग बिरयानी 500 में या बिरयानी लेना? बिरयानी भी है, मटन हम मुझे खुद ऑफर हुआ रात को, मैं बोला नहीं भाई एक दिन खा लेंगे तो दूसरे दिन फिर दाल सब्जी खाएंगे तो फायदा है। जो गाड़ी देख रहे हैं, ये पैसे दिए जा रहे हैं, लोगों को पैसे दे के लाया। 500 तो बड़ा यार कम पैसा है, बहुत कम। गरीब लोग होते हैं ना, तो चलो कहते हैं चलो जेब से तो नहीं खाएंगे ना। You agree with us that 175(2) does not confer jurisdiction It or does. competence? No, it does. Competence. It does. It does. Okay, you insist that it does. No, I confer competence, even if it is couched in negative terms. I think negative is a relative word. And it If it says no court, what else could be? And since law can here mean provincial law, it likewise confers it on provincial law. So what is then to prevent a province from saying, we are conferring a right of appeal on the Supreme Court relying on this 175(2)? Because here is our law, we are conferring a jurisdiction. Because they would be barred under entry 55. That's the whole point. Yes. That therefore validly enacted law. Let me explain this. If I may read a passage, exactly the same problem came before the court. 2021 CLD 214, para 63. Both these provisions are dealt with. Section 44 of the Competition Act के अंदर अपील है against the तो appellate फिर उसमें यही सवाल आ गया ना कि मैं उस पे आता हूँ प्रोसीजर। नहीं, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट ने अपील प्रोवाइड कर दी, जो सवाल ये कि वेयर इज इट मेंशन्ड एक्सप्रेसली? जरा देखिएगा इसी में जवाब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर, अगर आप देखिएगा इसी में जवाब 175(2) के तहत ही लार्ज हुई होगी। जी अगर आप देखिएगा पैरा 62, it's the exact problem which her ladyship Justice Ayesha Malik has dealt with. Exactly the same. 62 is in 62. Which page? 293. 293. सर पैरा 62 में मैं पहला पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, अगर आप देखिएगा एंट्री 55 रिप्रोड्यूस्ड है, ठीक, उसके नीचे मैं पढ़ रहा हूं। There are two parts to entry 55. Have your lordships found? Yes. There are two parts to entry 55. The first part allows Parliament to legislate on the jurisdiction and powers of all court in respect to matters in the FLL, which is the Federal Legislative List. The Supreme Court has been excluded from this part, meaning that Parliament cannot legislate on the jurisdiction and power of the Supreme Court in so far as the entries in the FLL. The second part of entry 55 deals with the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan and confirming of supplemental, please, confer supplemental powers as well. Article 175(2) of the Constitution states that no court shall have jurisdiction save as is conferred on it by the Constitution or by or under the law. Article 175(2) of the Constitution gives Parliament competence to confer jurisdiction on the court by or under a law. The question is, does this include the jurisdiction of the Supreme Court? When Article 175(2) is read with entry 55 of the first part of the FLL and Article 142 of the Constitution, Parliament is competent to make law enlarging the jurisdiction of the Supreme Court and conferring supplementary power, which is provided by the Constitution. By or under the yes, by or under the Constitution, meaning that the constitutional jurisdiction of the Supreme Court of Pakistan cannot be taken away, but where the Constitution authorizes on jurisdiction, it can be enlarged. So these are the two question again. ये judgment, has it been assailed before this court? Yes. क्या हुआ उसका? No, it's not suspended. I think leave grant हुई। इसे निकालिए, ये आप चेक कीजिए, ये इसके नंबर ले लीजिएगा, बता दें
सर मैं भी सीसीपी को उसमें लीव ग्रांट के लिए सस्पेंड नहीं. Is it unanimous or is it a unanimous judgment? Sir, on certain issues, on this issue, on this issue, all three agree. All three agree. Okay. On this issue, which is given at the last para of her ladyship's judgment, अगर आप वो भी देख लें, उन्होंने बताया किस पे dispute है, किस पे नहीं है. But Mr. Faisal, my problem with perhaps this judgment also, otherwise, is that how do you pass this, the test of expressly authorized by or under the Constitution? So what I would understand from this is that somewhere in the Constitution it must expressly talk about enlargement of the jurisdiction. Not the enlargement. Not the enlargement. Enlargement and supplemental are restrictions. Apart from that, you cannot. But enlargement of the jurisdiction and supplemental powers is the restriction imposed on Parliament's powers when it legislates on the jurisdiction and powers of the Supreme. Let me just finish with this judgment. Can you tell us the background of this judgment? What had happened? Sir, जो Competition Act है उसकी वायरीज चैलेंज हुई थी, and one of the provisions which was challenged was that how can a direct appeal be provided from a statutory body through a statute? That was one of the questions. Sorry, come again. Sir, how can a direct appeal be provided to the Supreme Court through an ordinary statute? It was to the Supreme Court. Yes. And what is the legislative? Against Sir, Section 44 है Competition Act. Against whose order? Sir, वो order होता है Competition Appellate Tribunal के order के. So, in the nature of a service type matter, direct to the Supreme Court. Direct to the Supreme Court. Election Act में भी है. But the question which was answered was one of legislative competence. कि कहाँ से power आता है? इसमें तो अगर आप देखें ज़िंदगी साहब आर्टिकल 185 में 185 में सिर्फ अगेंस्ट चाहे वो स्टेट ऑफ इजराइल है, चाहे वो इंडियन फोर्सेस हैं, और खुल के हमें सपोर्ट करना चाहिए हक और सच का, और अमन का रास्ता निकालना चाहिए। और अमन का रास्ता तभी निकल सकता है जब उनको उनका राइट जो है ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़, मैं किसी भी मज़हब को एक्सट्रीमिज़म से नहीं नथी कर सकती, हर मज़हब अमन सिखाता है, मगर मज़हब की बेसिस पे जिस तरह मुस्लिम पैलेस्टीनियंस को जिस तरीके से उनको एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, उनको एक्सिक्यूट किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, ये वॉर फुटिंग पे इस काम को रोकना पड़ेगा। अगर ग्लोबल पावर्स इस वक्त नहीं सामने आएंगी इन एक्शंस को, और जिस तरह की ओपन थ्रेट्स इजराइल दे रहा है और वहाँ पे मस्जिदों को शहीद कर रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, जिस तरह इंसानियत दफन की जा रही है, जब तक इसको रोका नहीं जाएगा और इसको टेबल पे रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और पैलेस्टीनियंस की अपनी ज़मीन है, गाज़ा उनकी अपनी ज़मीन है जिसके ऊपर कब्ज़ा किया इजराइल ने, वो ऑक्यूपायर्स थे, और फिर उसके बाद जब उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्सेस ने जब रीऑक्यूपाई कर दिया है गाज़ा को वहाँ पे, और अब उनको कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, इजराइल नेतन्याहू कह रहा है, और यहाँ पे हम लोग रबल्स में तब्दील कर देंगे। तो जिस खौफनाक सूरत हाल पे ये जा रहा है, ये वही है जो मोदी कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वर्स्ट ह्यूमन राइट्स की जो बारबारिज्म, जो ब्रूटैलिटी और जो ऑपरेशन हो रही है, वो दुनिया के अंदर ये दो सबसे ऑप्रेस्ड नेशंस हैं, और जहाँ पे कोई इंसान होना ही सबसे बड़ी सज़ा है। तो इनके भी जो प्रिजनर्स हैं, जो इनके साथ वॉर क्राइम्स जो किए जा रहे हैं, इसके ऊपर मैं बहुत सीरियस, क्योंकि ये तो मेरी अपनी ज़ात का है, जिस तरह हम कश्मीर की आज़ादी की तहरीक लीड कर रहे हैं, उस तरह पैलेस्टीनियंस की प्रॉब्लम्स को हम समझ सकते हैं, और इसके लिए भी कुछ लाएअमल मैं अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को भी तजवीज़ करूँगी, और अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जो है इंटरफेथ हारमनी की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। इंटरफेथ हारमनी और पीस एक्टिविस्ट की डेलीगेशन जाएँ, चाहे वो इजिप्ट जाएँ जहाँ वो ज़ख्मी सारे वहाँ पर आए हुए हैं, चाहे गाज़ा में किसी तरीके से सेफ़ एंट्री कराई जाए, वहाँ पे लोगों को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की जाए, उनको एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड सप्लाईज़ कराई जाए। वहाँ पे एक बिल्कुल ही लाइट सारी बंद है, वहाँ पे एक अंधेरा है, वहाँ पे जिस तरीके से रबल्स में तब्दील किया जा रहा है, वहाँ पे डिमोलिश की जा रही है उनके घर, उनकी बिल्डिंग्स, उन लोगों को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है। और ये 21st सेंचुरी है, इतना खौफ आता है जो कुछ वहाँ पे हो रहा है इस वक्त। तो इसलिए इसके ऊपर मैं जितने भी दुनिया भर में मैं अपील करती हूँ ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं, जो पीस के एक्टिविस्ट हैं, कि खुदाया हम लोग पीस के लिए हाथ से हाथ मिला के हम लोग निकलें और अमन के रास्ते पे निकलें, अमन की शमा
आए और पैलेस्टीनियंस की आवाज़ बने, वो हक और सच पर हैं। और दुनिया ने पिछले 76 ईयर से सबसे पुराना मसला कश्मीर और पैलेस्टाइन का यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में। ये बताएं कि आपने अडियाला जेल का भी विजिट किया, एक ख़ास जमात जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी जो ख़वातीन हैं जेलों में, खुसूसन अडियाला जेल में 2-3 ख़वातीन खुद भी आई, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे साथ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो इस पर आप क्या कहती हैं, क्या जिलों में ऐसा वाकई हो रहा है तहरीक इंसाफ की ख़वातीन? देखें, किसी भी किस्म के प्रिजनर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों, फंडामेंटल जो राइट्स हैं बेसिक, हर प्रिजनर मेरे लिए इक्वल है। बेसिक मेरी कंसर्न ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की और मेरी अपनी जो पूरी जद्दोजहद है इंसानियत के लिए और कश्मीर कॉज के हवाले से, तो वो यही है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली वहाँ पे, उनको वहाँ पे जो है एक हाइजीन एनवायरनमेंट हो, फैमिली से मिलने की उनको इजाज़त हो, उनको लीगल काउंसिल एक्सेस हो, उनको फिज़िकली प्रोड्यूस किया जाए। और जो जहाँ तक उनके कोर्ट की बात है, वो अदालत का मामला है, वो सब जुडिस मामले हैं, उसके अंदर क्योंकि हम सब पढ़े लिखे हैं और उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर करे तो वो आई थिंक वो बहुत ही अनसिविलाइज्ड हो जाता है। और आई थिंक वी शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन द जुडिशरी, जो भी जुडिशल हमारा सिस्टम है वी शुड रिस्पेक्ट इट। मगर जहाँ तक प्रिजन्स की बात है, मैं खुद उनके दौरे कर रही हूँ और अडियाला जेल के अंदर भी जो मुझे वहाँ से मैंने खुद भी रिपोर्ट्स ली हैं कि प्रिजनर्स जितने भी, चाहे उसमें सियासी हैं, गैर सियासी हैं या जो भी उनके केसेस हैं, कि उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जा रही है और उनको कोर्ट्स में भी प्रोड्यूस किया जा रहा है और उनको उनके जो लॉयर्स हैं वो भी उनको मिल रहे हैं। यहाँ पे भी जाके मैं ये सारी चीज़ें चेक करूँगी और सामान भी लेकर हम जो भी यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जो पेन होती है छोटे छोटे बच्चों को प्रिजन्स में देखना और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनकी माएँ यहाँ पे अरेस्टेड हैं और वो कहीं और जा नहीं सकते, तो उनका क्या कसूर है। तो उनकी भी काउंसलिंग हो, काउंसलिंग सेशंस भी हम अरेंज करवाने लगे हैं और उनकी भी थेरेपी हो और यहाँ पे उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, प्लेग्राउंड हो, अच्छा स्कूल हो, वो बच्चे जाएँ और एटलीस्ट उनका ये जो बचपन है ये ना खो जाए कि उन्होंने आँख ही जेल में खोली, उनका ना गुनाह ना कसूर। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा, आपने अडियाला जेल का विजिट किया है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई, खुसूसन जो एक जमात के सरबराह वहाँ पे कैद हैं, उस हवाले से हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई? देखिए, मैं लास्ट टाइम जब गई थी तो जिनकी आप जिक्र करें वो नहीं थे, मैं सबको मिली हूँ और मैं यकीन करें मेरे लिए सारे प्रिजनर्स, कोई रेडी वाला है, किसी ने छोटी सी चोरी की है, कोई बड़ी चोरी की है, कोई वैसे अपने आप को बेगुनाह कह रहा है या बेगुनाह है या नहीं है या कुछ भी है, मेरे लिए सारे इक्वल हैं क्योंकि जो मैंडेट मुझे मिला है मुझे वो 22 करोड़ आवाम का मिला है और उसके अंदर जो भी हैं आप सब इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं। और क्योंकि मेरा कंपैरिजन मकबूजा जम्मू कश्मीर की मैंने जेलों में आंख खोली है, हम लोगों ने देखा है वहाँ की बर्बरियत, तो उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे। क्योंकि जब आपका पॉलिटिकल प्रिजनर्स पाकिस्तान के, उनको फिजिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज उनसे मिल रही हैं, उनको लॉयर्स की एक्सेस है, आगे जज जानता है, जज ने फैसला करना है, उसमें तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता, मगर उनको वो सारी ड्यू जो फैसिलिटीज़ जो लीगल हैं जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, वो उनको जो मिल रही हैं, जिनको नहीं मिल रही हैं, उस पर हमने काम करना है। बहुत शुक्रिया। इंसानी हकूक़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर मिसाल मलिक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि इसराइल में जंगी जराइम किए जा रहे हैं, इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जारी है। There is a bar in the constitution itself that no appeal can be provided. For example, I'm not talking restriction, enlargement. You want to enlarge it. Let's take the example of the law reforms ordinance. Now, Article 199, as His Lordship Justice Mandokhel pointed out, it's a constitutional judicial forum. Now, the appeal under that is provided under a statute. You see, Mr. Siddiqui, law reforms ordinance is a totally different species. It was a continuation of letters patent. It was a continuation of other provisions, and plus subsequently it was saved under Article 270. So, I mean, there are no parallels. I mean, you are comparing apples with oranges. Sir, I'm comparing apples with apples, and I'll explain Certainly, you are trying to do, but as far as I'm concerned, I'm so far. You compare Granny Smiths with Granny Smiths. But the question, you know, again, I mean, reflecting, adding to. I'll come to the second part also. You see, here you're creating a jurisdiction for the reason that
The appellate jurisdiction is provided in 185. Fine. Now 185 does not either talk of, it neither talks of an intra-court appeal, nor it talks of any other appeal envisaging something happening within the Supreme Court. What you're doing is, you're creating a new jurisdiction. Yes. You're creating, you're not enlarging. And when there is a creation, then the creation can't be done under item 55. Enlargement of and it cannot be done in exercise of powers under either 175(2) because that is also restrictive, and Article 191, that is also restrictive. So there are restrictions all over the place, and intentionally so. So that if an appeal be provided where the lawmaker or the framers of the Constitution consciously, deliberately did not provide one, then the matter should go back to them, and under the new circumstances, if they consider it appropriate, they can amend the Constitution and specifically provide an appeal. Using supplemental powers, using ancillary powers, I mean, that is, I think, stretching the Constitution much what it is originally My response to the latter questions is, there is no bar under Article 199. There is no bar under Article 185. There is no bar under Article 184(3) that you can't provide an intra-court appeal through an ordinary statute. There is no bar. Mr. Faisal Siddiqui. Where is the bar? Where the language used is express authorization, that is the bar. But you have to have express authorization within the Constitution in order to utilize. What more express bar is required than Article 175(2)? 175(2) does not confer legislative competence. If I may add to what my learned colleague is saying, you see, it seems to me that the proper context of this sentence from this judgment at page 293 that you are so strongly relying upon, and with great respect, I think you are taking it out of context. But anyway, I think that is perhaps expanded upon at page 295. Kindly पैरा अगर बता दीजिएगा. Page 295, पैरा 63. इसमें जो अंडरलाइन पोर्शन है ना, वो जरा देखें. इसमें एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की रेफर्ड टू है, और उसके बाद उसका आई डोंट नो वेदर इट्स कोटिंग फ्रॉम जजमेंट, इट्स कोटिंग फ्रॉम अ जजमेंट. वो उसमें देखिए जिसको पैरा अंडरलाइन किया हुआ है, जो जी वो 2000 SCMR जो कोर्ट की में, उसके अंदर शायद that exputs that 175(2) point in proper context. पढ़िए तो सही, सुखानी पढ़िए. ये जो underlined है ना, under entry 55 under entry 55 of the Federal List. I'm sorry, I actually have the page 295 जहाँ अगर आप पैरा काइंडली अगर बता दें, पैरा 63 का सेकंड, पैरा 63 second column third paragraph. If the entry 55 was not there in the FLL, it could be argued that Article 175(2) of the Constitution in respect of matters relating to cooperative societies exclusively failing under the competence of the provincial legislature, a law can validly be made by the provincial legislature, enlarging jurisdiction of the Supreme Court and conferring on its supplementary powers. But